Good morning, students. Class 9, Chapter 6, Lines and Angles. It's basic. In the previous video, we have discussed already discussed relation between interior angles, relation between exterior angles. In the interior angles, alternate interior angles whose shape like a Z, co-interior angles, interior angles on the same side of a transversal. In the exterior angles, alternate exterior angles and co-exterior angles, exterior angles on the same side of a transversal. Now we have discussed important relation between interior and exterior angles, a relation in which interior and exterior angles both are used, and the relation is corresponding angles, in which one angle exterior and one angle is interior, and both angles are corresponding mean like बिल्कुल एक जैसे फील होंगे, जैसे कि एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7. These are corresponding angles. And remember for this, if AB parallel to CD, then we can say corresponding angles are equal. If AB and CD are not parallel, then corresponding angles are not equal. So these are relation between interior and exterior angle. Now next, vertically opposite angles. It is very important and used in the many questions. Vertically opposite angles. If two lines cross each other, then the angles opposite to each other are called vertically opposite angles. It means if two lines cross each other, then the angle opposite to each other, these two angles or these two angles are called vertically opposite angles. These two angles or these two angles. And remember, vertical opposite angles are always equal. In the angles there is no condition, but in the corresponding angles the condition is compulsory. Then line AB parallel to line CD. I hope you understand. Now note down it. Okay students, now we have discussed a main point, adjacent angles. adjacents का मीन होता है सिंपल सी भाषा में पड़ोसी, ऐसे एंगल जो एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में हो. इट्स मीन टू एंगल्स आर adjacent when they have a common arm and a common vertex. आर्म और वर्टेक्स के बारे में स्टडी करते हैं. These angle ABC and angle PQR, it is called vertex, and these are arms of an angle. If these two angles are like this, in these two angles this arm is common and these two arms are non-common. If two angles have one common arm and one vertex, then these two angles are called adjacent angles. And a very important, based on the adjacent angle, linear pair angles. Very important. Adjacent angles whose non-common arms, remember, whose non-common arms are opposite rays. It means adjacent angles in which non-commons are exact opposite to each other, like this. These two angles have one common arm
and a one vertex. So these two angles are adjacent, and these two angles we can say that known common arms are exact opposite to each other. It means they make a straight line. So these two angles are called linear pair angles. And note, sum of linear pair angles is 180 degree always. इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा विदाउट एनी कंडीशन, बट कंडीशन इज दिस एंगल मस्ट बी लीनियर पेयर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नोट डाउन इट. Okay, now students, we have to discuss straight angle sum property. It is also used in the chapter very much, so it is also important. When three or more angles, remember, three or more angles have a common vertex and together make a straight line. आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा एंगल हो और उनमें वर्टेक्स सेम हो उन सब का, और वो इस तरीके से रखे हो कि मिलकर एक सीधी लाइन क्रिएट कर दें. लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल्स हैव अ सेम वर्टेक्स एंड आफ्टर पुटिंग टुगेदर दे मेक अ स्ट्रेट लाइन. सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स. एंड सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री. ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है तो सम 180 डिग्री होगा. नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. वी नो अ ट्राइंगल कंटेन थ्री साइड्स. एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मीन उसको इंक्रीज करना. एक्सटेंशन ऑफ एन adjacent और consecutive साइड. adjacent कॉल करो या consecutive कॉल करो, इट्स योर चॉइस, ऑफ द ट्राइंगल. इट्स मीन ट्राइंगल की तीन साइडें हैं, आपने किसी भी एक साइड को चूज करा. सपोज हमने BC को चूज करा तो BC की adjacent साइड AC भी कंसिडर की जा सकती है और AB भी. सपोज हम BC की adjacent साइड AB कंसिडर करते हैं तो हम AB को एक्सटेंड करेंगे. तो साइड और इसे एक्सटेंशन करने के बाद जो एंगल बना इसे कॉल किया जाएगा एक्सटीरियर एंगल. अगेन वी कैन से दैट सपोज हमने ये वाली साइड ली और हमने इसको एक्सटेंड करा तो इसे कॉल करेंगे एक्सटीरियर एंगल. सपोज आपने ये वाली साइड ली, इसको एक्सटेंड करा तो ये वाला बन गया एक्सटीरियर एंगल. तो सिंपल सा लॉजिक है, एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड द एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ द ट्राइंगल. आई होप यू अंडरस्टैंड. नोट डाउन इट. Okay students, now we discuss exterior angle sum property of a triangle. In the previous definition we have discussed exterior angle of a triangle. Exterior angle of a triangle, when we study any side of a triangle and extend any consecutive side of this triangle, then the angle between the side and after extension, the angle is called exterior. Exterior angle sum property of triangle. Exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles of the triangle. It means exterior angle is equal to sum of interior opposite angles of a triangle. एक नोट है जो आपको पता होना चाहिए. इन ट्राइंगल ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C together are called interior angles, and only angle A in this position, angle A is called vertical angle, only angle A, and in this position angle B and angle C together are called base angles.
These two are base angles. Supplementary angles, a pair of two angles whose sum is 180 degree, and complementary angle, a pair of two angles whose sum is 90 degree. So this is basic of this chapter. Note down and its practice and revise again and again. Okay, now thank you.